Hello बच्चों, let's read the given question. The question says state the theorem of perpendicular axis. So to understand this question we need to understand about the concept of perpendicular axis theorem. So as a key concept we can say perpendicular axis theorem ka first we will try to analyze the use of it, and then we will move on further so that we have a better clarity. Perpendicular axis. So let's suppose हमारे पास कोई एक body है, and this body we are interested in calculating moment of inertia about this axis. ठीक है, लेट्स से थोड़ी सी आसान सा केस लेते हैं. सिमेट्रिकल बॉडी है. लेट्स से वी हैव अ रिंग एंड वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सेस के अबाउट. तो लेट्स से मोस्टली हमें पता होता है दैट इज एम आर स्क्वायर, बट वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सेस विच आर लाइंग इन द सेम प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द दिस एक्सेस जहाँ से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. लेट्स से इसको हम आई जेड मान लेते हैं. So let's say the moment of inertia about this axis is Ix, moment of inertia about this axis is Iy. ठीक है, तो यहाँ पे we can see कि since जो Ix और Iy है, since it is lying in the same plane and symmetrical है, so we can say by perpendicular axis theorem हम Ix या Iy के about moment of inertia find कर सकते हैं using perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem says Iz, that is moment of inertia about this perpendicular axis, will be equals to जो दो एक्सेस है जो कि लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में. सो दिस इज व्हाट द एक्सप्रेशन फॉर परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम इज. अब हम उसका स्टेटमेंट लिख देते हैं टू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. सो वी कैन से द थ्योरम स्टेट्स दैट it states that we can write it states that moment of inertia of a plane lamina, moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular about an axis perpendicular to its plane is equals to the sum of is equal to the sum of its moment of inertia, its moment of inertia about two mutually perpendicular about two mutually perpendicular axis concurrent मीन्स एक ही पॉइंट से निकलने वाली. यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज द थ्री एक्सेस आर कॉन्करेंट विथ परपेंडिकुलर एक्सेस with perpendicular axis and lying in the plane of laminar body and lying in plane of laminar body. So this is the statement of perpendicular axis theorem we need to keep in mind, और उसी के बेसिस पे we have written the expression of it. So यहाँ पे let's try to derive this expression. So let's suppose we have a body, ठीक है, and this body is having three axes which are mutually perpendicular. We can say this is let's say z x, let's say इसको हम y मान लेते हैं, this is z. ठीक, नाउ व्हाट वी विल डू इज ये सबसे पहले हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है. इट इज़ एप्लीकेबल फॉर टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स. प्लेन लेमिनार ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, ना कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए. सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ से व्हाट वी कैन डू इज वी विल कंसिडर अ पॉइंट मास dm. अब यहाँ से वी कैन से इट इज एट अ डिस्टेंस r from z, x from this y axis, and we can say y from this x axis. ये x है हमारा.
ठीक है. So from here we can see, and this is our point O. Now we can say कि ये जो पॉइंट हमने लिया है पॉइंट मास dm, अब यहाँ पे वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, तो हमें पता है कि क्या है ये. ठीक है. तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस निकाल सकते हैं. तो z एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें हम, so it can be written as iz will be equal to, since it is a continuous body, we will use integration dm r square. Similarly ix के about moment of inertia we will write it as to be dm y square. ठीक है. And similarly iy के about we can say integration of dm x square. Since we know के moment of inertia जो होता है वो product of mass and the perpendicular distance from axis of rotation. So इस तरीके से we have written all the about all तीनों axis के about we have written the moment of inertia. Now we can say if we talk about ये जो expression हमने लिखा है, let's say ये हमारा point है जहाँ पे हमने mass consider किया P point है. ठीक है. And this point is let's say our L point, ये point L है. तो in triangle OPL, we can write by Pythagoras theorem r square will be equals to x square plus y square. ये x है, this distance is y, so this will be the case. If we multiply both sides by dm and integrate it, तो ये रिजल्ट तो हमें क्या मिल गया. फाइनली वी कैन से द एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए था वो आ गया. देयरफॉर दिस इज व्हाट, दिस इज iz will be equals to, this is what iy, this is ix. so हम देख सकते हैं this is the required जो रिजल्ट हमें वो मिल चुका है for perpendicular axis theorem. I hope you understood the solution. All the best.